also joined us. Very nice. So just give us a minute, Dr. Avinash, we will start. Chadaji, good evening. Yes, good evening, sir. Good evening. We all along last few months, we used to have Mr. Ranjit Singh speaking from Canada. And just Chada Sahab from United States. Dr. Avinash. Yes, Chadaji, that is correct, but it is also dangerous. Because जब मेमोरी लॉस होनी शुरू होती है तो किसी को पता नहीं चलता कि मेरी मेमोरी लॉस है। सुनता नहीं फिर खत्म So, Dr. Avinash, you can hear me, please? Dr. Avinash, can you hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir, I can. You're here, fine. No, because your camera was not on, so I was wondering. Yes, sir. Okay, good. Now I can see you. Good. Thank you. So, we'll start. So, namaskar, good evening. Welcome once again to the Friday evening talk show. And as I always remind everybody, it's a great feeling to have been doing this program for the last 4 years, 4.5 in fact now, and always talking about quality of life. हम इतनी चर्चा करते हैं quality of life पे, मैं किसी दिन या आज भी फीडबैक लूंगा सबसे के क्वालिटी ऑफ लाइफ में पिछले 4 साल में किसमें क्या चेंजेस अपने अंदर अप्रिशिएट की कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कुछ improve कर सके. So that is important. We talk about quality of life, but I'm sure we want quality of life. So welcome. I welcome all the participants from various organizations, from various representations of various colonies, associations, and organizations. It's a pleasure to have you all over. It's absolutely exciting for me to see you all once again everywhere, every Friday evening. As always, मैं रिमाइंड कराता हूं सबसे कि ये केवल एक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा नहीं है, एक हमारा मिशन है, और वो मिशन है that India के elders should feel safe, should feel respectful while they are having their journey of aging. I will share with it some information. Today there was a beautiful article by Professor Panda about a gentleman who decided to have assisted suicide in Switzerland last year. ये भी concept आ रहा है. So, because हम quality of life की बात करते हैं, हमें ये भी पता है कि quality of life अगर चाहते हैं तो मुझे अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी. और इसलिए मैं हर फ्राइडे आपके साथ एक प्रण लेता हूं, एक स्लोगन देता हूं. मैं सबको इनवाइट करता हूं मेरे साथ खुल के जोर से बोलिए, मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ, मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ, मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ, मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ, मेरे हाथ. थैंक यू वेरी मच, क्योंकि यही हमारा पर्पस है कि आप सब लोग अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लीजिए और हम आपकी मदद करें. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो आज जो हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं
वो दीमक की तरह आपके अंदर आती है, एंड इट ग्रोज सो स्लोली, बट इट इफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ सो मच कि आप हैरान हो। और मुझे अभी विंग कमांडर चड्डा ने मैसेज डाला कि मुझे आज का सेशन याद था, इसलिए मेरी मेमोरी साफ। मेमोरी इज द वन आइटम ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन। आज आप सब ये समझेंगे कि केवल मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे तो आप कॉग्निटिव डिक्लाइन को नहीं पकड़ पाएंगे। सो वी हैव विद अस डॉक्टर अविनाश गोस्वामी, who is an associate consultant in neurology at the Apollo Hospital, Sarita, Vihar, and he's an expert in the field of neurology, which deals with cognitive disorders. आपने पहले इनको लेक्चर सुना है इनका, डॉक्टर पी.एन. रंजन का, जब इन्होंने स्ट्रोक्स के बारे में बताया। And today, Dr. Goswami is going to talk to us about cognitive decline. थोड़ी देर के लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए कि मेमोरी का शब्द अपनी मेमोरी से निकाल दी। मेमोरी का शब्द, क्योंकि इसके ऊपर इतना डिटेल आएगा कि आप खुद अपनी मेमोरी भूल जाएंगे। सो डॉक्टर अविनाश गोस्वामी, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर, एंड ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर डर के बैठे हैं, कहीं ये ना पता लग जाए कि मेरी याददाश्त कमजोर है। सो आई एश्योर एवरीबॉडी, किसी का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, एंड डॉक्टर गोस्वामी विल टेल यू व्हाट इज कॉग्निटिव डिक्लाइन। वेलकम डॉक्टर गोस्वामी। Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity to speak about cognitive decline in this lovely class. Share me. Yeah, you can share your slides. Yeah. My slides are visible. Can you Yes, see my slides? yes, sir. doctor. Yes, sir. Go ahead. Thank you. So, what is cognitive decline? The first thing, what do you mean by cognition? So, it refers to mental process involved in acquiring knowledge and understanding and encompassing functions like thinking, learning, memory, attention, and language. So, memory is not the only thing which is included in cognition. Along with memory, there are so many things like thinking, learning, attention, language. These are the things which comes under cognition. What are the components of cognition? They are attention, memory, language, learning, thinking, perception, reasoning, and judgment. So you can see memory is not the only thing which comes under cognition. Memory is one part of cognition. Okay. So because I will brief you in later how we differentiate memory from other cognitive function. So what is next? What is dementia? Why we talk about cognitive decline? Why we talk about cognition? So what is the importance of cognition? So the first and foremost thing, if there is decline in cognition, it suggests that the person is suffering from dementia. So we define dementia as loss of cognitive function like thinking, memory, reasoning to such an extent that it interferes with person's daily life and activities. So I'm sure most of you must be aware about what is diabetes, asthma, kidney failure, cancer, arthritis, stroke, and heart attack. But hardly few people would be aware about what is dementia and what is Alzheimer's disease. So there are different causes of dementia, like the dementia causes of dementia has been divided into reversible and reversible. I'm talking first about the reversible
of dementia, which are so many, like vitamin B12 deficiency, which can present as cognitive decline, vitamin B1 deficiency, thyroid disorder, vascular dementia, traumatic brain injury, normal pressure hydrocephalus. If we diagnose these things early and treat adequately, we can reverse the cognitive decline, we can reverse the dementia. But there are certain conditions like irreversible causes which leads to dementia and which is not reversible. They are Alzheimer's disease, Parkinson's disease dementia, frontotemporal dementia, Lewy body dementia. Although subtypes of all these dementias are there, which we can discuss in later. So what happens in brain when the person has cognitive decline or dementia? If we see the top slide, this on the right, we see this, we call it as medial temporal lobe, which is very important for memory and cognition. This is the hippocampus, which is very important. The degeneration, the loss of volume of hippocampus leads to cognitive decline and dementia. If we see cerebral cortex in the topmost slide, topmost image, it is very much, cortex is very much preserved. But if we see the lower slides, the first in left, we can see there is shrinkage of hippocampus, and there is dilatation of ventricles. If we compare from above image, there is definite shrinkage of hippocampus over here, and if we see here, it is preserved. We can see there is some atrophy, there is shrinkage of cortex, but here in the above image, there is no shrinkage. If we see the lower and right image, here we see significant shrinkage of hippocampus and significant dilatation of the ventricles and significant atrophy, shrinkage of cortex. So these are the features which neurologists or physicians can see and make out that the person is suffering from dementia. Although this is not for the normal person, this we see in MRI or other images, and we make a diagnosis that some person is having dementia and what type of dementia it is. So if we see the healthy brain, this the left image, this is the healthy brain, and the right, which severe Alzheimer's disease. Here the brain has there is significant shrinkage of brain. If we see the PET images of dementia patient, there is significant hypometabolism in the right images. And if we see the left image, PET scan of normal brain, there is normal metabolism. So when we see when we suspect a person is having cognitive decline or dementia, so if a person repeats himself or herself, seems paranoid, seems suspicious, agitated for no reason, keeps forgetting things, withdraws from people, seems depressed or seems confused, you can suspect the person having these symptoms can have dementia or cognitive decline. So this is very important when to comment that the person is having dementia or the person is having age-related memory loss. There is definite, as the age advances, there is definite memory loss. So how come we differentiate the memory losses as per age or it is due to dementia? So to differentiate that, this slide is very important. If we see, the normal person may forget part of an experience, not total, but a dementic patient will forget entire experience. The normal person remembers the experience later. If you keeps on asking the normal person, if he temporarily forgets the thing, he or her forgets the thing, he can remember it later, but the dementia patient won't be able to remember the things. The normal person can understand written or spoken direction, but dementia patient won't be able to understand that. Can use reminder. The normal person, if the normal person has some memory impairment, they can use reminder notes, but the dementic patient won't be able to handle that. The normal person can take care of himself, but dementia patient won't be able to take care of self as disease advances. In early stage, a patient can take care of her or himself, but later stage, the patient won't be able to take care of self. So the dementia patient would be requiring some help.
So the same thing what I mentioned you here, for when to suspect that the person is having dementia, the patient would be having loss of short-term memory. We need not compare it with long-term memory. If you ask from dementia patient, if you ask what is the name of your college, he might be able to tell you what is it was he studied 30-40 years back, but he would be remembering the things. It doesn't mean the person does not has dementia. What happens in early dementia, all in advanced dementia, the remote memory also vanishes, but the earliest thing is short-term memory. The person keeps some things somewhere and forgets where does it where has he kept it. Okay, so this is very important. Remote memory would be intact, but the recent memory, we call it episodic memory in medical language. Episodic memory gets affected first in dementia, particularly in Alzheimer's patient. Difficulties in handling familiar work, especially difficulty making judgment. The dementia patient won't be able to make a judgment. So difficulty with language expression or comprehension, difficulty solving problems and calculating, confusion with time and direction. Dementia patient would be having confusion with time and direction. He won't be able to differentiate this is morning or this is evening or this is night. Solving things randomly. He would be keeping the things here and there. There won't be a definite pattern. Loss of initiation. Dementia patient won't be taking initiative. If you see some dementia, severely dementic patient, if there is some fire in the house, he won't take initiation. He won't run out from house, run away from house, but he will remain there because of loss of initiation. Abnormal changes in behaviors, changes in personality. The dementia person, the personality changes very fast. Initially, if you say a normal, the person before development of dementia, he would be very well dressed. He always maintains good personality. But as dementia advances, the personality changes occurs very rapidly. So what is dementia? Dementia, I already mentioned it. Dementia is a general term used for progressive loss of brain functions that affect the ability to live and increase dependence. Dementia is not part of normal aging. Dementia causes memory loss. It affects thinking, speaking, making decisions. It interferes with the ability to perform normal activities of daily living like shopping, handling finances, driving, personal hygiene. Person starts behaving differently. It includes insomnia, wandering, apathy, and aggression. It is in its final stage, dementia makes the patient fully dependent on others. So the diagnosis of dementia, if you suspect dementia in yourself or someone else, consult your general physician or a neurologist. In any major hospital, memory clinics are also available. What neurologists may do, they understand your problems, current health, medical history, do a neurological evaluation, check your memory. They questions you, or they check your orientation, mental abilities by using tests. They do blood tests to detect the treat reversible problems, which is very important, which I already told you. They do brain scans like MRI, CT scan, and PET scan. So whenever you suspect some dementia, like cognitive decline in any person who is your relative, friend, or in yourself, you must consult a neurologist or general physician. So what we do PET scan, MRI. What we see hypometabolism in brain. If we see normal brain, and if we see Alzheimer's patient, there would be definite decline in metabolism of brain. There are reversible causes of dementia. I already mentioned they are traumatic brain injury, normal pressure hydrocephalus, vitamin deficiency, infection, and metabolic conditions, which if we treat adequately and timely, we can reverse the dementia. What are the treatment options? We have very limited treatment options for dementia patients. Like in medical management, we have limited drugs. They are cholinesterase inhibitors like donepezil, rivastigmine, galantamine. We have NMDA receptor antagonists like memantine, and the newer one, anti-amyloid antibody, which is
aducanumab, which is new in the market. For the reversible causes, we need to see the cause of dementia and we treat that. Other treatment includes addressing underlying conditions causing dementia, like symptoms such as infections, vitamin deficiency, metabolic disorders, and medication side effects. Importance of early detection is early diagnostic crucial for effective management and potential reversal of symptoms. Timely treatment can help slow down the progression of dementia and improve quality of life. We should do holistic approach in managing dementia patient. Medication is the one thing. The role of medication is limited. We should do holistic management. We need to manage so many things in dementia. So what to expect? In memory loss, we see, if we see cognitive decline, in memory loss, the patient would be forgetting recent events or information. He would start misplacing the things, difficulty in finding the right words. There would be behavioral changes, which are mood swings, confusion, agitation, changes in interest and behavior. In daily tasks, we see challenges in cooking, difficulty in paying bills, which the person used to do very nicely in past, problem with personal grooming, communication would be difficult because of word finding difficulty, holding conversation is challenging for dementia patient and would require assistance. So one important thing is Parkinson's disease, because we understand that Parkinson's disease is not dementia, but approximately 30% of Parkinson's disease patient may develop dementia. Not in out of 100, 30% may develop dementia-like features. So Parkinson's disease is the most common neurodegenerative movement disorder, affecting 0.5 to 5% of the population older than 65. If we see the prevalence, the prevalence of Parkinson's disease increases with age in the most age group. It is less than 1% in people aged 65 to 69 years, but it is 2 to 5% in more than 90 years of age. So what is Parkinson's disease dementia? It occurs in up to 30% of people with Parkinson's disease and is a major cause of disability. Pathologically, Parkinson's dementia, where dementia follows the onset of Parkinsonism by at least 1 year, overlaps with dementia with Lewy body. So when to suspect the person is having Parkinson's disease dementia? If the doctor has diagnosed you as Parkinson's disease, if you see behavioral changes like memory impairment, thinking, reasoning, everything, these disabilities, if developed within 1 year of diagnosis of Parkinson's disease, it indicates the person may be having Parkinson's disease dementia. So what happens in brain when the person has Parkinson's disease? If we see, this is the normal brain and this is the substantia nigra, which secretes dopamine, which is the hormone, the deficiency of which lead to Parkinson's disease. If we see in Parkinson's disease patient, there is loss of substantia nigra. If we see this image, the right image, the dark structure, you can see these are the substantia nigra, but in left one, there is loss of substantia nigra and there is deficiency of dopamine due to loss of substantia nigra. So if we talk about the stages of Parkinson's disease, in mild stage, person starts having unilateral features. Unilateral means one arm and one leg becomes affected. The person may be having tremor or rigidity in one arm. But as it advances, it may appear on both the sides. And symptoms of Parkinson's, and as it advances, symptoms of Parkinson's are characterized by loss of balance and slowness of movement. Again, in severe stage, the person becomes very unstable. It is very difficult to maintain gait and all. In severe Parkinson's disease, the person becomes wheelchair bound. So the degree of cognitive impairment affecting executive function in patients with Parkinson's disease is associated with impaired decision making and capacity. Parkinson's dementia confers an increased risk of mortality regardless of whether the patient is living in the community or nursing home.
So if we see the prevalence of dementia, the most important being Alzheimer's disease, which constitutes 33% of dementia patients. Vascular dementia is the second one, which is approximately 20%. Frontotemporal dementia is 12%. Korsakoff dementia syndrome is 10%. Dementia with Lewy bodies is 10%, and others are 15%. I'm talking about non-reversible causes of dementia in this slide. If we see statistics of Alzheimer's disease, generally it is diagnosed in people over 65 years of age, although the less prevalent early onset of Alzheimer's disease occur much earlier. In 2006, there were 26.6 million sufferers worldwide. Alzheimer's is predicted to affect 1 in 85 people globally by 2050. So stages of Alzheimer's disease, we need to understand this. This is the first stage is mild cognitive impairment. The second stage is mild Alzheimer's disease. Third is moderate Alzheimer's. And the fourth is severe Alzheimer's. Before mild cognitive impairment, we call it as preclinical stage. So why this is important to learn? So mild cognitive impairment duration, the duration after mild cognitive impairment to mild Alzheimer's is 7 years. Means once a person develops MCI, mild cognitive impairment, the person will be having mild Alzheimer's after 7 years. And if we detect the patient during mild cognitive impairment, and if we treat it on right time, we can increase the duration. We can prolong this duration from 7 years to 17 years. So this is very important. What happens in mild cognitive impairment? The disease begins in medial temporal lobe. The blue, the area you can see, this is the medial temporal lobe, which is firstly affected in Alzheimer's disease. The symptoms of which are short-term memory loss. If the disease advances in from mild cognitive impairment to mild Alzheimer's disease, the medial temporal lobe as well as lateral temporal lobe and parietal lobes are also affected. These are the parts of brain. There are 4 parts of brain: frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, and occipital lobe. The symptoms of mild Alzheimer's are reading problem, poor object recognition, and poor direction sense. Patient would forget the direction. In moderate Alzheimer's disease spreads to frontal lobe along with temporal and parietal lobe. The symptoms include poor judgment, impulsivity, and short attention. If we talk to the person having moderate Alzheimer's, he won't he won't be attentive. If we talk about severe Alzheimer's, which is the last stage, the duration is approximately 3 years. In this stage, disease spreads to occipital lobe, which is affected at the end. The symptoms include visual problem. The patient would be having visual problem along with other. So it is previously there was no methods to know which person would be developing Alzheimer's disease, but there are research going on. There are methods we can do. There is one study where we test the CSF, cerebral spinal fluid, in which we see beta amyloid 42. If the quantity of beta amyloid decreases in CSF, we can understand that this person would be developing Alzheimer's disease in future. But the test is invasive, so we cannot do that in daily practice. There is research going on to see that beta amyloid in blood. So if the test becomes available in near future, by simple blood test, we can predict that this person is prone to develop Alzheimer's disease. The test is not available right now, but definitely research is going on. Most probably we would be getting the result in coming few years. So what happens in Alzheimer's disease? Already told you that there is hypometabolism of the brain, particularly in temporal lobe. So if what the caregivers need to do if there is a person with cognitive decline or dementia. So as a caregiver,
Understand that behavior is because of dementia and do not get upset when the patient acts strangely. Learn ways to talk to the patient or handle problems like agitation. Avail of community support to share tips and reduce overwhelm. Do things with the patient that are fun, like reading stories to the patient, seeing albums together, going for walks. The things of ways to help the patient remember things means we need to keep the patient entertained. Remember, if the patient is less agitated, helpless, caregiving is easier and more pleasant. Every patient is different in how fast dementia progress and the order of what gets affected. So what friends, relatives or neighbors need to do as people around the caregiver, help the main caregivers, take a break and understand their moods, run errands for them, provide them emotional support, do not make too many demands on the main caregiver, do not criticize. If you are concerned about dementia, you can join dementia awareness activities such as walks, talk to others about dementia and caregivers, and help spread the voices of patients and caregivers, raise funds, do volunteer work in facilities that can help patients and caregivers, such as daycare, respite care, helpiness. Get trained as a counselor to support patients and caregivers, participate in drug trials, fund research, support and lobby for policies to help the cause of elder care and dementia. So what can help dementia patient? So see the hobbies and interest of patient. You must know about what the patient who is suffering from dementia had what hobbies and what were their interests. So try to engage the person with in that activities. So the progression of dementia would be slowing, and the advanced stage the patient would achieve the advanced stage very late. So what are the patient you can help the patient in playing music instrument, running, walking, playing, discuss group discussion. You can involve the person in social gathering. You can involve in family function. So these are the I already told you, non-drug treatments like luminance therapy, reality orientation, music therapy, horticulture, training of daily living activities, multisensory therapy, training of memory, cognitive stimulation activities, training on hand-eye coordination, art therapy, training on attention, like this. These are the things we can do and help the dementia patient. Thank you. Thank you, Dr. Goswami. What is important is, first of all, can you stop sharing, please? And Parnita, please pin both of us. Yeah. So first of all, thank you very much. A very exhaustive, difficult topic, but brought out very simply. Now, I'm sure आगे ही काफी questions आ रहे हैं. Let me first give few lines to all of you and let Dr. Avinash say, give his comments on what I'm going to say. Cognitive decline has multiple components. Of which memory is one. And loss of memory का एक बहुत important manifestation जो नजर आता है वो है dementia. So Dr. Avinash, my first question on behalf of everybody, dementia is part of cognitive decline. Yes, sir. So dementia is part of cognitive decline, and cognitive decline में dementia के अलावा और भी बहुत चीजें होती हैं. That was the first slide that Dr. Avinash showed you. Language, problem solving. Thinking, reasoning. Sorry? Sir, reasoning, thinking. Reasoning, thinking. ये सारी चीजें मिलके cognition बनती हैं. उसमें सबसे ज्यादा उभर के जो आता है वो memory loss है. नजर जो आता है. क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहानेबाजी नजर आती है लोगों को. अब एल्डर ने
और मेरे ख्याल बत्रा जी का क्वेश्चन, आई जस्ट कम टू दैट. आई वांट टू क्लियर योर डाउट्स. नाउ, commonest form of dementia is part of cognition. और सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया जो है उसका नाम एल्जाइमर्स. सो एल्जाइमर अलग से बीमारी नहीं है. एल्जाइमर इज ए फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, बट इट इज द कॉमनेस्ट, इसलिए उसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है. देन असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन. किसी को ये, हर एक यहाँ पे जो बैठे हैं वो सब पूछेंगे मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है. दैट इज वेयर आई वांट टू स्टार्ट विद यू डॉक्टर अविनाश. व्हाट आर दी, ये जितनी आपने शिकायतें बताई डॉक्टर अविनाश ने, ये सब अभी पूछ रहे थे क्वेश्चन मिस्टर बत्रा भी, जितनी भी शिकायतें बनाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीजें याद रखिए, हम सबको सारी शिकायतें नहीं होंगी, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से. सो एक मिक्सचर होता है. किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले पेश हो जाएगी, याददाश्त कमजोर शायद ना हो. किसी को लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब डॉक्टर अविनाश, व्हेन यू से लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है कॉग्निटिव डिक्लाइन में, उसका एक एग्जांपल दीजिए प्लीज. सर, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत में यहाँ से करूँगा सर, कि जी. जैसे कि जो मैंने बताया कि अल्जाइमर्स में जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्टेज में जाते हैं, उसके पहले माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आता है. ठीक ओके. है. माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को अगर हम सब क्लासिफाई करते हैं तो उसके अंदर दो क्लासिफिकेशन है. एक तो है सर एमनेस्टिक एंड एक है नॉन एमनेस्टिक. एमनेस्टिक एमसीआई एंड नॉन एमनेस्टिक एमसीआई. एमनेस्टिक एमसीआई के अंदर आता है कि पेशेंट को मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, सिर्फ मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, कि पेशेंट स्टार्ट्स विथ मेमोरी प्रॉब्लम. नॉन एमनेस्टिक जो एमसीएम, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, उसके अंदर जो लैंग्वेज के अदर कंपोनेंट्स है वो आते हैं, जैसे अटेंशन, कैलकुलेशन. कोई भी बहुत ओके. पहले तो कोई पर्सन बहुत अच्छा कैलकुलेशन में था, आज उनको जोड़ घटाव में दिक्कत आ रही है. कोई जा रहे हैं मार्केट में, जा रहे हैं, किसी को पैसे देने हैं, दो सामान खरीदे हैं, 100 रुपये बन रहे थे, उन्होंने कैलकुलेट करके उनको 200 दे दिया, या फिर उनको 50 रुपये दे रहे थे तो उनको फिर से बोलना पड़ा कि आपको 50 और देना है. तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं. वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी हो जाएगी, वर्ड फाइंडिंग की अप्रोप्रिएट. अब फोन सामने रखा हुआ है, मांगे कि मुझे वो दे दो, ही वोंट बी एबल टू से कि मुझे फोन दे दो. वर्ड फाइंडिंग के उसे क्या बोलते हैं उनको पता ही नहीं चलेगा, कि उनको पता ही नहीं चलेगा उससे क्या बोलते हैं, थिंग्स को क्या बोलते हैं. तो वेरी वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होगी, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आएगी, ये सब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. ये जो नॉन एमनेस्टिक है. अगर डिजीज एडवांस होता है सर, तो एमनेस्टिक डिमेंशिया जो होते हैं, नो एमनेस्टिक एमसीआई जो होते हैं, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, वो अल्जाइमर्स में कन्वर्ट होता है. वॉइस. ठीक है. मोस्टली देर इज नो 100% रूल, बट मोस्ट ऑफ द एमनेस्टिक एमसीआई जिसमें मेमोरी अफेक्ट होती मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, वो अल्जाइमर्स में कन्वर्ट होते हैं ओवर फ्यूचर, इन द फ्यूचर. और जो नॉन एमनेस्टिक होते हैं, जो अदर टाइप्स ऑफ डिमेंशिया में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, डिमेंशिया विथ लेवी बॉडी, दीज. है. अल्जाइमर्स डिजीज को फिर भी मैनेज किया जा सकता है, उसमें फिर भी कुछ मेडिसिन का रोल है, लेकिन जो दूसरे डिमेंशियाज हैं, चाहे लाइक फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया या फिर लेवी बॉडी, उसके अंदर वी हैव लिमिटेड ऑप्शंस. ओके. वेरी सो नाइस. हमें, अगर हम माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट पे डिटेक्ट कर लेते हैं किसी को, कि किसी को माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, वेदर इट इज एमनेस्टिक, वेदर इट इज नॉन एमनेस्टिक. सो किसी को ये प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं देखना है कि नहीं जी मेरी मेमोरी तो अच्छी है तो मतलब डिमेंशिया नहीं हो सकता है. ऐसा हाँ. नहीं, मेमोरी इज नॉट द ओनली थिंग. हो सकता है कि उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही हो सकता है उन्हें वर्ड वर्ड फाइंडिंग में डिफिकल्टी आ रही होगी. तो और जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड ऑप्शन. लिमिटेड ऑप्शंस. लिमिटेड ऑप्शन. और अगर उनको अर्ली डिटेक्ट करते हैं और उनको अगर हम टाइमली ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि प्रोग्रेशन को हम लोग डिले कर सकते हैं. और दूसरा, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के पहले भी जो प्री क्लिनिकल स्टेज होगा, उसके लिए अभी सीएसएफ में टेस्ट है, लेकिन फ्यूचर में व्हाट वी एज डॉक्टर आर लिसनिंग एंड वी आर रीडिंग द आर्टिकल्स, आने वाले फ्यूचर में 2, 3, 4 ईयर्स के अंदर हमारे पास
ऐसे मार्कर आ जाएंगे जो ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाएगा। जैसे ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि किसी को डायबिटीज है या नहीं है, वैसे ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि कोई पर्सन डिमेंशिया के लिए प्रोन है या नहीं है। अगर वो उस स्टेज में हमें पता चल जाता है और उसको उसी टाइम पे मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो डिमेंशिया के का प्रिवेलेंस काफी कम हो जाएगा। इफ Now, see, all of you, please listen carefully. कॉग्निटिव डिक्लाइन के अंदर मेमोरी एक हिस्सा है। अभी हमारे दोस्त चड्डा जी ने कहा कि मुझे याद है प्रोग्राम, इसलिए मुझे मेमोरी लॉस नहीं है। और देखिए अभी डॉक्टर गोस्वामी ने क्या बताया कि यू कैन हैव कॉग्निटिव डिक्लाइन विदाउट मेमोरी लॉस। यू कैन हैव इट फॉर कैलकुलेशन, यू कैन हैव इट फॉर वर्ड्स नहीं मिलते, वो भी कॉग्निटिव डिक्लाइन है, क्योंकि मेमोरी कम नहीं है। क्योंकि कॉग्निटिव डिक्लाइन में 5 चीजें हैं, 6 चीजें हैं। इसी को आज प्रोग्राम जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, दैट मेमोरी 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 पे जितना जोर दिया जा रहा है, उसको फिर भी मैनेज करना डॉक्टर गोस्वामी के मुताबिक फिर भी आसान है। लेकिन मेमोरी को छोड़ के जो बाकी चीजें कॉग्निटिव डिक्लाइन में है, वो मैनेज करना मुश्किल, उसको डिटेक्ट करना। नाउ हियर इज माय वार्निंग व्हिच आई वांट डॉक्टर अविनाश टू endorse or agree with me or give me his opinion. No individual in the world, no individual in the world can find out that he has cognitive decline by himself. Dr. Goswami, my statement is, कोई भी इंसान खुद नहीं पता कर सकता कि मुझे cognitive decline. You agree or disagree? I agree, sir. I totally agree. Totally. So now understand कि अगर आपने अपनी कॉग्निटिव डिक्लाइन से बचना है तो असेसमेंट आपको करवानी पड़ेगी, खुद अंदाजे मत लगाइए। आई विल जस्ट स्पेंड 2 minutes on 2 issues. Dr. Goswami, if I am 73 years old person and I want to know कि मुझे कॉग्निटिव डिक्लाइन के कंपोनेंट्स ठीक है कि ठीक नहीं है, मुझे क्या करना होगा? सर, सबसे पहले तो आपको किसी जनरल फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना होगा। न्यूरोलॉजिस्ट के पास डिफरेंट बैटरीज होते हैं सर, टेस्ट बैटरीज होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पकड़नी है तो मैं पकड़ लूंगा। पहले टेस्ट करते हैं कि जो मेमोरी प्रॉब्लम या जो कॉग्निशन के जो पैरामीटर्स हैं, ऐसा तो कोई भी पर्सन नहीं होगा जो 70-75 के ऊपर कॉग्निटिव फंक्शन सारे इंटैक्ट होंगे। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा, कहीं ना कहीं कंपोनेंट कुछ ना कुछ डिक्लाइन तो आएगा ही आएगा। तो हमें डिफरेंशिएट करना है कि कॉग्निटिव डिक्लाइन है एज पर एज है या फिर ये डिमेंशिया की वजह से है। ठीक है, तो अब अगर एक बार हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि द कॉग्निटिव डिक्लाइन इज नॉट ड्यू एज पर एज, इट इज मोर देन दैट, तो उस केस में सॉरी सर, आपने कहा कि असेसमेंट के आपके पास तरीके हैं। राइट सर, यू हैव, सो प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ मेथड। इनके पास चार्ट्स होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, डिजाइन्स होते हैं, बाय विच दे कैन फाइंड आउट कि आपको एज रिलेटेड माइल्ड मेमोरी लॉस है या बीमारी वाली कॉग्निटिव डिक्लाइन है। ये दोनों पता कर सकते हैं एट द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर एनी एज। मत कहिए कि ये मेरी इतनी उम्र हो गई है तो असेसमेंट नहीं होगा, आगे आने वाले टाइम के लिए जरूरी है। सो ए माइल्ड एलिमेंट ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन सब में होता है, लेकिन असेसमेंट आप एक क्वालिफाइड पर्सन से ही कराना चाहिए। आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। सो डोंट से मेरे को ऐसे, मुझे तो जी फोन नंबर सारे याद हैं, मुझे तो मैं कैलकुलेट करके आज तक मैंने पैसे किसी को ज्यादा नहीं दिए, ये सब अंदाजे हैं। सो द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, cognitive decline happens in everybody in varying degrees. You must find out your level and see what can be done. So now I come to the question from Dr. Goswami. What can be done for a mild cognitive impairment, not age related, जिनको बीमारी है, उनको what can you suggest? 1, 2, 3. You just said calculations.
I got a call before the session from Malti Jaiswal, and she was mentioning about the exercises people do, but at home, हम अगर बच्चों को पढ़ाएं या क्या चीजें एक एल्डर को आप सजेस्ट करेंगे जिसमें कि उनकी कॉग्निटिव डिक्लाइन कुछ कम हो सके? सर, सबसे पहले तो कोई भी पर्सन को हमें अगर लग गया कि किसी को माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, तो सबसे पहले उनका रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं। रूटीन ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसा है, ये सब। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो एल्डरली एज में अगर ब्लड प्रेशर मोर देन 160 है सिस्टोलिक, या फिर बहुत कम ब्लड प्रेशर है, तो वो भी डिमेंशिया की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो जनरल चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सारे पैरामीटर्स देखना है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से डिमेंशिया बढ़ रहा है। ब्लड टेस्ट से हमें ये देखना है कि कोई ऐसा माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रहा है तो कोई रिवर्सिबल कॉज तो नहीं है हमारे पास। अगर कोई रिवर्सिबल कॉज मिल जाता है तो उसे टाइमली ट्रीट करते हैं और उसे रिवर्स कर सकते हैं। अगर मुझे कोई कॉज नहीं मिला, अगर न्यूरोलॉजिस्ट को या जनरल फिजिशियन को कोई रिवर्सिबल कॉज नहीं मिला और हमें लग गया कि नहीं ये माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, डिजेनरेटिव है, जो नॉन प्रोग्रेसिव है, ये इट इज गोइंग टू प्रोग्रेस इफ वी डोंट एड्रेस। In that case, we have drug and MDA receptor जो हमने ये आपको बताया कि डोनेपेजिल है, मेमेंटीन है, वो सब ड्रग है, वो सब हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ लो डोज। अलॉन्ग विथ दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई पर्सन रीडिंग वगैरह में किसी को इंटरेस्ट है तो पढ़ाई करना, म्यूजिक थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को म्यूजिक गाना सुनना, गाने गाना, अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किसी को खेलने में इंटरेस्ट है, आउटडोर हो इंडोर हो जो भी हो, घर पे चेस खेलिए, लूडो खेलिए, कैरम खेलिए। आउटडोर एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, बाहर जाके खेलिए। किसी को गार्डनिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो गार्डनिंग वगैरह कीजिए। दीज आर द हॉबीज। किसी की जो भी हॉबीज है उसमें इन्वॉल्व, उनको पुश करना है उस तरफ में। तो इस तरह से, तो इसीलिए हॉलिस्टिक अप्रोच, ड्रग एंड अदर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। केयर टेकर जो भी है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें काउंसिल करना कि डोंट बी इरिटेटेड, आप इरिटेट मत होइए। कोई भी पेशेंट है, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उनको वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी आ रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, द पेशेंट शुड गेट द सपोर्ट ऑफ फैमिली, नेबर, फ्रेंड्स। तो हमें उनको भी काउंसिल करना है, मेडिसिन देनी है, रिलेटिव्स को काउंसिल करना है, फ्रेंड्स को काउंसिल करना है, नेबर्स को काउंसिल करना है कि उनकी मदद करे, उनके साथ गलत बर्ताव ना करे। अगर वो गलत बर्ताव करते हैं तो उनका एजिटेशन और बढ़ता है, डिमेंशिया और बढ़ती है। कोई रिवर्सिबल कॉजेज मिलता है तो उसे ट्रीट करना है और उनकी हॉबीज में उनको पुश करना है सो दैट इनका प्रोग्रेशन कम हो जाए। आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो डॉक्टर गोस्वामी ने वार्निंग दिया, जो अगर आपने कॉग्निटिव डिक्लाइन को, रफ्तार को स्लो करना है, सबसे पहले जो आपकी एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज है, चाहे आज सुबह डॉक्टर गोस्वामी, आई हैड ए जेंटलमैन, ही इज 59 years old, दैट्स ऑल, राइट सर। एंड ही, जो मैं इमीडिएट एग्जांपल दे रहा हूं कि उनको डायबिटीज है पिछले 15 साल से, और 15 साल से उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। मैंने पिछले 8 साल तक की रिपोर्ट्स देखी, कभी भी उनका HbA1c 8.1 से कम नहीं आया। आई गॉट एन MRI डन, फ्रंटोपराइटल एरिया में माइल्ड इंफार्क्ट्स, मल्टीपल इंफार्क्ट्स। राइट। अब समझ आई कि उनकी जो खून की नाड़ियां दिमाग को जा रही थी, उनके दिमाग का खुराक लेके डायबिटीज कंट्रोल ना होने की वजह से वो पाइप्स आस्ते आस्ते ब्लॉक हो रही थी, जैसे हार्ट अटैक ब्लॉक होता है, and gradually areas of the brain degenerate हो रहे थे। और आज जो उसका परिवार लेके आया, एक शिकायत थी, डायबिटीज की शिकायत नहीं थी उनकी। उनकी क्या शिकायत थी, आजकल पिताजी को ना बहकी बहकी बातें बड़े कर रहे हैं। दैट वाज द ओनली कंप्लेंट, बिकॉज जो इंटेलिजेंस का एरिया, फ्रंटल सामने का एरिया इंटेलिजेंस में माना जाता है, वहीं पे उनकी नाड़ियां बंद हो रही है, एंड ही गॉट कॉग्निटिव डिक्लाइन।
बैठे ऐसे ऐसे कर रहे थे आज। सो प्लीज रिमेंबर द फर्स्ट थिंग इज मैनेज योर डिजीजेस, दैट विल डिक्रीज योर डिक्लाइन। और डिजीजेस के अंदर दवाई, न्यूट्रिशन, और थर्ड इन्होंने समझाया कुछ एक्टिविटीज। यहां पे मैं एक चीज वार्निंग दे दूं सब, ये जितनी चेंजेस डॉक्टर अविनाश ने बताई हैं ये एक दिन में नहीं पैदा होती, बहुत आस्ते आस्ते। और इसलिए कईयों को पता भी नहीं चलता कि मुझे ये तकलीफ हो रही। तो कैसे पता लगता है? लोग बताते हैं, आपके यार दोस्त बताते हैं। उनसे प्लीज गुस्सा मत होइए, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। दैट अच्छा, मैं ज्यादा बोल रहा था, मैंने 3 दफा ये बात दोबारा दोहराई है। ऑब्जर्व दिस बिकॉज पीपल विल ऑब्जर्व यू, you will not come to know. So we will just talk 2 lines about management because a lot of questions are coming. Dr. Mudgal is asking what test. We'll just come to the question. I'm interested to know, जो आपने बताया कि एक्टिविटी जैसे गेम्स खेलना या गाने गाना, अब मैंने सारी उम्र गाना नहीं गाया, तो मैं अब 70 साल पे गाना गाना मोटिवेट कैसे होऊंगा? पहले ही डायबिटीज से मर रहा हूं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा, यार दोस्त कह रहे हैं तो अब बिल्कुल ही निकट्ठू हो गया। हाउ डू आई मोटिवेट माई सेल्फ फॉर सिंगिंग? सर ऐसा नहीं है कि सभी सिर्फ गाना गाना या नो, गाने आई एम जस्ट सुनना सेइंग इज न्यू द हॉबी। ओनली। हाँ, कोई भी हॉबीज है, उसके हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ तो हॉबीज होती ही है सर, जिसको मस्त। कोई ना कोई हॉबीज होती है। मैंने बोला जो हॉबीज उनकी पहले से रही है, जिसमें उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, हमें फैमिली से जानना है कि उनकी हॉबीज क्या थी। ठीक है, और उस डायरेक्शन में उनको लेके जाना है कि फिर से वो हॉबीज उनकी डेवलप हो और उसमें उनको इंगेज करना है। सी नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, जैसे दवाई अगर किसी को बुखार है तो सबको क्रोसिन लिखी जाएगी। जिसको कॉग्निटिव डिक्लाइन हमें पता लगा, सबको गाना नहीं लिखा जाएगा, सबको टेबल टेनिस खेलने के लिए नहीं बोला जाएगा। इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। उसे असेसमेंट करनी पड़ेगी कि ये वाला इंसान क्या कर सकता है। दैट विल हैव टू बी आइडेंटिफाइड एंड देन दैट पर्सन विल बी सपोर्टेड। सो देयर आर मेनी थिंग्स पॉसिबल बट दे आर कामयाब। So I think I'll open the chapter for discussion. I think first, Batra ji, you wanted to ask something. Yes, sir. Please go ahead. Sir, my question is that before we decide to go to a physician or a neurologist, there should be some marker for myself or my family to observe what is my behavior, what the problem happened. Then I decide to go. Because as you said, degeneration is always there in the age, with the age. Some will be there. It is beyond certain problem that we think this is a problem. It's not a normal thing, aging. What do you have to say about that? Batra ji, before Dr. Goswami says, I think you, if you heard him, Yeah. he says everybody after a certain age has certain cognitive decline. अगर Okay. आप इंतजार करेंगे आपके परिवार वाले कुछ नोटिस करें तो डॉक्टर गोस्वामी काफी लेट हो चुका है। Would you agree कि Yeah, अगर but would you say that all of us deserve to go to know? yes, Okay. before Okay. somebody notices, Hmm. पहले ही जाइए। अच्छा. Dr. Goswami, what do you say? The Definitely, timing sir, of I agree, sir. assessment. सिमिलरली जैसे हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, बट इफ वी टॉक अबाउट वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज, for after the age of 40 years, everyone goes every year to a doctor, get health checkup done. That I'm not telling कि आप 40 years के बाद डॉक्टर से जाइए, कंसल्ट कीजिए। नहीं सर, हेल्थ चेकअप तो हम भी I'm कराते हैं, talking about लेकिन दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट. यही तो कह रहे हैं कि डायबिटीज कंट्रोल से क्वालिटी ऑफ लाइफ शायद इतनी खराब ना हो, कॉग्निटिव डिक्लाइन से क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज्यादा असर होता है। इसलिए ये जो सेशन है आपको चूंटी काटने के लिए है कि उठिए, जागिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बातें कर रहे हैं हम, मेरा स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं, कैसे जिम्मेदारी लेंगे।
अपनी cognitive decline को assessment कराइए. So any other question? Up to what stage dementia can be reversed? Sir, dementia, we cannot reverse the dementia. We can slow down the progression. अगर प्री क्लिनिकल स्टेज में डिटेक्ट किया हमने, जो कि उसके लिए अभी टेस्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हुआ, वी कैन डेफिनेटली डायग्नोज द पेशेंट इन माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. और उस स्टेज में अगर हम लोग डिटेक्ट करते हैं, तो जो मैंने बताया था कि एमसीआई से माइल्ड अल्जाइमर्स में कन्वर्जन में 7 years का टाइम लगता है. वी कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन, वी कैन मेक इट to 15 years, 17 years. And similarly, Rajini ji, I think you've got your answer, because आपका भी question यही था, who should get tested? So the question is everyone, because assessment of cognitive decline is not a part of those lovely packages sold by laboratories, or it is not a part of routine interview done, and therefore it is neglected. And that is why a special session on cognitive decline liya hai. And let me assure you, this one session will not be enough. Itne questions aayenge sabke dimag mein. We will take up the session again. Sir, I just wanted to ask what age, like, I have a question. Sorry, Rajna ji, boliye. yeah, I just wanted to ask, like people have problems at 40. Supposing no problem, then I'm 50, should I go? Or I'm 55, should I go? Because even in annual medical checkup, there is no recommendation of going to a neurologist. That's So right. that way everybody would be rushing to a neurologist, but at what age? When do we think we all... I think we Dr. Rajni is getting to the point ke kuch cut-off age. Dr. Avinash, would you agree if I say that after the age of 55, because there is evidence to show in science that 50 and 55 ke baad mein metabolism starts changing. So agar mujhe prone hai Alzheimer, Dr. Goswami has told you the risk factors. So if somebody has a hypertension, which is उनको भी blood pressure है, उनके परिवार का भी है, तो Dr. Goswami, will such a person be at risk of developing cognitive decline faster than the others? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. वैसे पर्सन जिनके कोमॉर्बिडिटी, जिनके साथ कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा है, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन या अदर कोमॉर्बिडिटी हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, तो वैसे केसेस में डिमेंशिया की प्रोबेबिलिटी होती है. टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं. किसी को अगर कार्डियक डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हो सकता है उनको वैस्कुलर डिमेंशिया हो, जिसके अंदर वेसल्स नैरो हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो जाता है. Doctor, your question, safely to say 55 should be the first approximate age where somebody should first time get a cognitive assessment done. हालांकि उनके कोई शिकायत नहीं है, उनके परिवार को कोई शिकायत नहीं है, तो भी. Yes, sir. So I have no cardiac issues, no BP, nothing, no diabetes, but I'm going to be 65. Isn't it I have lost those 7 years? The 7 year... Doesn't matter. You and your husband are good singers, therefore you can get it done now also. No, I'll definitely go and get it done. Good, very nice. Any other question, Ji? I have a question. Yes, please go ahead. Dementia cannot be reversed, but we can slow down the progress. That's right. No, but you also said that vitamin B12 and vitamin B1, that also helps. But vitamin B12, the range is too big, 187 to 833. No. Does it okay if a man is 200 or a man needs to be 800? No, sir. ऐसा नहीं. The safe level of vitamin B12 is, we keep in between. As neurologists, we don't want lower normal. 197, 200 is lower normal, and 800, 1000 is upper normal. We keep in between. Between the range of 400, 500, we consider it as safe. And number two, Goel Sahab, Yes, sir. B12 deficiency causing cognitive decline is considered irreversible. So usko deficiency 190 क्या लोग आते हैं 58 B12, 60 level B12. So those cases are ones which are likely to reverse
if somebody's got 200, 210 and showing, maybe unlikely कि B12 की वजह है. So B12 severe deficiency. न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है सर, क्योंकि जैसे जैसे एज एडवांस होती है बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है कि बॉडी जितना पहले जो जीआई सिस्टम जितना एक्टिव था, बॉडी जो भी खाया उसको बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे ओल्ड एज में क्वांटिटी कम हो जाती है और उसके बाद बॉडी का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो जो आपने न्यूट्रिशन लिया जरूर बॉडी में, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, बॉडी ने उसको रिटेन नहीं किया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार टेस्ट कराएं और हमें पता चले कि आपका लेवल क्या है। Dr. Sunita Sharma is saying, is anosmia a risk factor for Alzheimer? Why would anosmia? Anosmia is a risk factor of the anosmia we get in Parkinson's disease. Parkinson. So if the person is having anosmia, the person may be having Parkinson's disease. The person, 30% of Parkinson's disease may be having Parkinson's disease dementia. And does serotonin and dopamine level in blood have any relation to cognitive decline? There is no direct, obviously motor functions definitely, if we have normal dopamine level, the motor function would be adequate. With low dopamine level, motor functions would decline. What we get in Parkinson's disease, we have low level of dopamine in the body. Okay, that's why the patient develops Parkinson's disease. And again, same thing, if you are having Parkinson's disease, 30% of persons having Parkinson's disease is prone to develop dementia. And we have an input from our partner Malti Jaiswal, who's informing us that Inspiring Foundation is working with an organization. Dementia Indian Alliance, sir. We have Sorry? collaborated with Dementia Indian Alliance. Dementia and India Alliance. That's right. conducting these dementia Probably screening one of and these days, community Malti, very nice. One of these days, we'll have a special presentation on what can be done at home for people with dementia. Yes, Mahesh ji, you may ask your question, please. Thanks very much, Dr. Sir. Just a small clarification, just to clear myself. There are three things: dementia, Alzheimer, and Parkinson's. So while dementia relates to the affecting the brain, which of course attention and memory and other aspects, Alzheimer is the advanced stage of dementia, Yes. and Parkinson's is the relating to the slowness in the bodily movements. Is that right? So dementia is an umbrella term. Dementia is an umbrella term. Under dementia, there are so many things. Under dementia, Alzheimer's disease comes under dementia. Parkinson's disease dementia comes under dementia. So dementia is an umbrella term. It's a wider term. Parkinson's is a separate disease. लेकिन Parkinson's के अंदर you can have dementia, you can have cognitive decline. Separately, there are Parkinson's people who don't have memory loss. They can just have a expression loss. And varying degrees है. देखिए सबसे पहले आप सबको ध्यान रखना है. ये कोई ना ब्लड प्रेशर की तरह इंस्ट्रूमेंट नाप के आपका ब्लड प्रेशर कितना है 140/90, आपका ब्लड प्रेशर कितना है 150/100 ज्यादा है, आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन कितना है 8/10, ऐसा पॉसिबल नहीं है. It is an assessment of various functions of the body and the brain, and therefore an assessment is given not in numbers but probably in Dr. Goswami, you would give not in numbers but say severity. Yes, sir. Severity, depending upon कि ये कितने चांस हैं इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ को असर करने में. Right. So उसका इलाज भी उसका ट्रीटमेंट नहीं होता. I would say the word is not treatment, but the word is solutions. What all can be solved? Because there are many conditions which are not diseases. So in managing cognitive decline, we insist on finding solutions to the individual problems. Pranita, are we good to go for the feedback?
So, I couldn't hear you. Yes, Yes. yes, sir. We are ready to run the feedback. We also wanted to announce if anybody is interested to participate in Yes. music or want to learn some art, drawing, so Inspiring Seniors Foundation have those communities. You can directly contact us and we'll add you those group. हम लोग भी weekly music programs वगैरह करते हैं, तो अगर किसी को भी interest है, individually specific, they can join those groups. Very nice. So I think, Dr. Shai, would you like to say something, please? Just a minute. Just a minute, Dr. Shai. ये हम complete कर लें जरा, then हाँ we'll, जी. just 1 minute, please. Okay, fine, no problem. So, could you please participate in the feedback so that we can get guidance from you and we can inform our first speakers also. It was very kind of you, Dr. Avinash, to spare your time. And I'm sure हमारे जो elders हैं, they have at least been sensitized that cognitive decline cannot be assessed by yourself. That is the first message. आप खुद नहीं अंदाजा लगा सकते. You have to be assessed by an expert. And सबसे पहले the first difference जो है वो है कि आपको बीमारी वाला प्रॉब्लम है, बीमारी वाली प्रेजेंटेशन है या एज रिलेटेड है. दोनों का अप्रोच टोटली अलग अलग है. Dr. Grewal, I have typed one question. Just please, if you could answer that. Please, ma'am. Will we come to know about mild cognitive impairment through MRI or simple test a neurologist takes? Sorry, please go ahead with your question. Dr. Avinash is listening. Will we come to know about a mild cognitive impairment through MRI? through MRI or some simple test a neurologist will take and will come to know? And do we need medicine for mild cognitive impairment? Dr. Avinash, the question is, can an MRI diagnose mild cognitive impairment or some blood test? And please, first. Yes. MRI is not required for to diagnose a mild cognitive impairment. Simple questionnaires are ready with neurologists, which the neurologist offer to the patient, and depending on that questionnaire only, we diagnose the patient is having MCI or not. There is no need of MRI to go. There is no blood test to go for to see for MCI. So I think please understand that no blood test. Should we take medicine if the neurologist says that you have mild cognitive impairment? No medicine. हाँ, अगर कोई treatable condition है तो उसकी दवाई. If some person is having mild cognitive impairment, we try to find out whether the cause is reversible or non-reversible. In reversible causes, definitely there is definite medicine and we treat that totally. But in irreversible causes also, we can prolong the duration. If we start medicine, we do holistic treatment, and with that we can increase the duration from 7 years to 15 years, 17 years. It can be. Thank you. And if you have a treatable condition, for example, आपने टेस्टिंग किया, काय की टेस्टिंग, मेमोरी लॉस की टेस्टिंग नहीं है, B12 की असेसमेंट होता है, आपका डायबिटीज का असेसमेंट होता है, ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस का असेसमेंट होता है, उनको इलाज के लिए दवाई अलग है. बट एज सच डॉक्टर गोस्वामी कह रहे हैं, मेमोरी के लिए, इंप्रूव के लिए सिर्फ कुश्ते बादाम और बादाम रोगन मलने का इलाज है, दवाइयां कोई नहीं है. थैंक यू डॉक्टर गरेवाल. थैंक यू, वेलकम मैम. जी डॉक्टर शाही, आप क्या कह रही थी? मैं डॉक्टर अविनाश से ये पूछना चाहती थी कि पीडी पार्किंसन डिजीज में टंग की इन्वॉल्वमेंट होती है? Any symptoms related with the tongue? Because mostly we can see their motor, finger movements and walk and mask-like face. What about the tongue? Is the involvement of tongue? Their tongue is also a muscle. Right, ma'am. tongue के usually tongue के muscles की involvement नहीं होती है.
थ्रोट के मसल्स की इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है, जिसकी वजह से, और लैरिंजियल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से होर्सनेस होती है, स्लरिंग ऑफ वॉइस होती है, बट टंग के मसल की यूजुअली इन्वॉल्वमेंट इन एडवांस स्टेज मे बी देयर, बट यूजुअली नहीं होता है मैम। अर्ली साइन नहीं है, नहीं, लाइक यू नो, सो जो अच्छा, So is there too? that is not because तो of the अब तो that is अच्छा लगता है। स्लाइवा स्लाइवा तो Saliva. निकलता है। Why do Dr. Goswami? Sorry. हाँ, better than Renu. Including Dr. Goswami. यस सर। पार्किंसन के पेशेंट्स को थूक क्यों निकलता है? वो इसलिए निकलता है कि सलाइवा, इसलिए कि उनके थ्रोट मसल्स की वीकनेस आती है, जिसकी वजह से स्वॉलोइंग नहीं हो पाती है और उसको वो बाहर निकालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अनाउंसमेंट कर सकती हूँ? जैसे अभी डॉक्टर ग्रेवाल ने बोला कि कोई भी बीमारी ओवरनाइट नहीं आती है, तो वन शुड गो फॉर रेगुलर चेकअप. So tomorrow we are holding a very comprehensive health checkup in New Friends Club. So please do join. The time is between 9:30 and 1 o'clock. And the test will be blood test, X-ray chest, ENT, especially oral hygiene, and for male, prostate, and for females, breast examination, pap smear, and mammogram. So it's a very comprehensive screening. So please do join and avail the opportunity. Beautiful. And thank you so much. Thank you. So, Marwaji, before I close, any message for Dr. Goswami? आपके लिए डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा जो सेशन किया, थैंक यू वेरी मच। बस सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार मुस्कुरा दो। आप एक बार मुस्कुरा दीजिए। appreciate Mr. Marwa. Smile is the best. Thank best you. medicine. Thank Smile you, is the best Goswami. medicine. So before we go, we once again thank Dr. Goswami for the time. Thanks both the doctors. Also announce to everybody before going, let's say together. मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ, मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ, मेरे हाथ, मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ, मेरे हाथ. Thank you very much, Dr. Avinash and Dr. Grewal. Thank you. Dr. Grewal and Dr. Goswami. अच्छा, Dr. Grewal. Hello, Dr. Grewal. जी मैम. मैं इंटरेस्टेड हूँ कि एक स्पेशल लेक्चर हो जाना चाहिए फैटी लिवर, ओनली फैटी लिवर, क्योंकि ये बड़ी कॉमन फाइंडिंग आजकल आ रही है अल्ट्रासाउंड पर. सो यू नो, वुड लाइक टू नेक्स्ट वीक ओनली फैटी लिवर. Yes, how to handle it. Kapil Sharma, we are having a lecture by him. We'll have a special one on fatty liver. Yeah, thank you so much. Thank you, Dr. Goswami. Thank you so much. Dr. Goswami. Thank you so much.